फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मिराया एडटेक। माय नेम इज वंदना एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप आप लोग वो टॉपिक्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे सो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, अगर आप नए हो उस चैनल में तो एक बार सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस है उन सबको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो नाउन का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग केस बोलते हैं। अगर हम लोग केस को अच्छे से स्टडी कर लेना तो हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। ओके, सो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट में मिस्टेक करते हैं या ऑब्जेक्ट में मिस्टेक करते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं वो केस के अंदर में ही फॉल करता है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 अगर आप नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो आप लोग मिस ना करें। और यस, और एक बात, तो अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज 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 फ्री करके अपने आप को जरूर 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 से कमेंट करिएगा। यस, तो आई होप यू कैन सी माय वीडियो नाउ। तो नाउन जो है ना, ओके, इट फंक्शंस एज मॉड्यूलर कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो नाउन एक सेंटेंस में एज एन इनिशिएटर काम करता है, एज एन रिसीवर काम करता है, एज एन ओनर काम करता है एंड एज अ क्लैरिफायर भी काम करता है। नॉमिनेटिव केस, जब नाउन जो है वो एज अ इनिशिएटर काम करे, मीन्स कोई भी काम को अगर ये शुरू कर रहा है, अगर ये कोई भी काम को शुरू कर रहा है, मीन्स कोई भी काम को परफॉर्म कर रहा है, तब हम लोग इसको नॉमिनेटिव केस में इसको पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं राम हिट द बेल बटन। सो राम जो है वो यहाँ पे इनिशिएटर है, वो एक एक्शन को स्टार्ट कर रहा है। द रिसीवर, here we can see accusative या objective केस में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे if I say राम it's a bell, so your bell is acting like an objective case क्योंकि ये जो है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। The owner, that is possessive case, okay, it shows ownership, origin और kind, किस तरीके का है। And clarifier, that is opposition, a secondary noun. For example, if I say that Ram and Shyam went to Shimla, so ये जो है, ये श्याम जो है, ये एक सेकेंडरी नाउन है। सो नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, जहां पे हम लोग हु या व्हाट क्वेश्चन करते हैं। जैसे जॉन थ्रू अ स्टोन, सो हियर जॉन इज द subjective case or nominative case. The horse kicked the boy. Here boy is the receiver. यहाँ पे बॉय जो है वो रिसीवर है। सो ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आस्क कर सकते हैं, whom या what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग अगर पूछेंगे कि whom did the horse kick, horse ने किसको लात मारा, बॉय को। एंड यहाँ पे आज क्या करेंगे, who threw a stone, so यहाँ पे who threw John and whom did the horse kick, boy.
That's an object. Prepositions acts as a spatial and directional infrastructure. The book is on the desk. Suppose here, this one is acting like a subject. That means it's a nominative case. And this is, oh, yeah, and that is the receiver of the action. Receiver means यहाँ पे ये एक objective case का use करते हैं. So यहाँ पे एक, you can see the book is on the table. On is what? Preposition. So noun immediately following a preposition are governed by its accusative case. So this one is accusative. Rama gave Hari a ball. So here I remember I said when two nouns are there, this becomes the secondary noun. This becomes the secondary, means Hari here becomes the secondary noun. So the person to whom something is given or for whom something is done, that can be positioned immediately after the verb. हम लोग ठीक इसको as a verb के ठीक पास, अगर ये gave जो है ये verb है, so verb के ठीक बाद में इसको हम add कर सकते हैं. Okay, so Ram gave Hari a ball. Ram gave a ball to Hari. So यहाँ पे same है, right? So moving the indirect object behind the direct object requires grammatical infrastructure. For example, to या for. अगर हम लोग इन दोनों का जो position है, अगर इन दोनों का position अगर interchange करना चाहते हैं, तो हम लोगों को या तो to या तो for use करना पड़ेगा. जैसे कि Ram gave Hari a ball. अगर मैं बोलूं ball को पहले लाना है, so मैं ये use करूंगी. Ram gave ball to Hari. Will you do me a favor? Will you do me a favor? So will you do a favor to me? She made Ruth a new dress. She made a new dress for Ruth. Okay, I hope you understood. अगर किसी के लिए काम हो रहा है तो वहां पे हम लोग for use करेंगे, और अगर किसी को कुछ काम किया जा रहा है किसी के लिए या किसी को दिया जा रहा है कुछ, so here there we will use to. Okay, so let's move on to the third form, that is possessive case. Remember possessive case, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे possession show करेंगे कि कोई चीज अगर किसी को belong करता है. For example, Rama's book is on the table. So Rama's, यहाँ पे ownership दिखा रहा है, ये ownership दिखा रहा है. Authorship means जैसे कि कोई चीज ने किसी ने लिखा. शेक्सपियर्स प्ले. तो ये जो है, ये जो भी प्लेज है वो कौन लिखा? शेक्सपियर ने लिखा. तो यहाँ पे ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं? ऑथरशिप दिखा रहे हैं. ओके, ओरिजिन, अगर ओरिजिन में बात करूं, द प्रेसिडेंट्स स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने वो स्पीच को डिलीवर किया, सो वो प्रेसिडेंट स्पीच हो गया. सो ये ओरिजिन हो गया. एंड काइंड, फॉर एग्जांपल अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो हर सारे बच्चों का प्लेग्राउंड है. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे यहाँ पे ओनर हो गए, लेकिन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली वो बच्चों के लिए ही है. सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव केस. द पंक्चुएशन लॉजिक. अच्छा, और एक बात, हम लोग पंक्चुएशन मार्क लगाते. फॉर एग्जांपल बॉय, अगर बॉयज टॉय, तो यहाँ पे एक बॉय है तो हम लोग बॉयज लगा दिए.
कि अगर बहुत सारे बॉयज है तो बॉयज तो ऑलरेडी एस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग apostrophe लगाएंगे. No s will be added here. So if plural ending with s, see, boys school, horses straight. So यहाँ पे if the plural or the word itself has s at the end, so we will not as apostrophe s, we will just add only, sorry, apostrophe, that's it. Okay, and if plural is not ending with s, then we can use this apostrophe s. Okay, then we can use apostrophe s if the plural is not ending with s. Means it's not about plural or singular. It's all about the s. Okay, the if the s is there, okay, then we will not add apostrophe s, only apostrophe will be there. And if there is no s, then we will add s, apostrophe s. Navigating compound structures and shared ownership. Okay. For example, the Prime Minister of Mauritius. The Prime Minister of Mauritius. Okay, कभी कभी क्या होता है एक टाइटल या पर्सन, क्योंकि if I say the PM of India's speech, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसको टाइटल दे दिए, ठीक है, पीएम को टाइटल दिए, कहाँ का पीएम है, ये इंडिया का पीएम. जॉइंट ओनरशिप लाइक करीम एंड सलीम, अगर दो जन है, सपोज देयर आर टू सब्जेक्ट्स, दोनों को साथ, दोनों का ही है, तो हम लोग लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. ओके, सो करीम एंड सलीम बेकरी. एंड अगर सेपरेट ओनरशिप है, अलग अलग है, so each noun receives on its own tag. राजा राउस एंड आर के नारायण स्मिथ, मतलब दोनों का सेपरेट सेपरेट नॉवेल्स है, एक नॉवल नहीं है. ओके, तो लेट्स सी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को एक बार देखते हैं. अगर मैं बोलूं सलीमा एंड करीम्स हाउस, दोनों का हाउस एक ही हाउस है, इफ दे हैव सेम है. लेकिन अगर दोनों नेबर्स है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों नेबर्स है, and excuse me for my bad drawing, I am very bad at drawing. Okay, अगर मैं बोलूं कि दोनों का अलग अलग है, दोनों नेबर्स है, सो बोल सकते हैं सलीमाज एंड करीम्स हाउस. Okay, I hope this is clear. सो अपोस्ट्रोफी का हम लोग पढ़ लिए हैं. लिविंग थिंग्स में कभी भी हमेशा अपोस्ट्रोफी हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट विथ नॉन लिविंग इट इज डिफिकल्ट. Okay, so let's see for an example. Let me just show you in the black screen. If I say that tables legs, this is absolutely correct. Sorry, incorrect. Why? Because table is an inanimate, means it's non-living. Object. If I say the man's leg, yes, this is right. Why? Because man is living. So क्या हम लोग पोजेशन कभी दिखा नहीं सकते क्या? कोई भी नॉन लिविंग में जरूर दिखा सकते हैं. कब दिखा सकते हैं? जब हम लोग कब दिखा सकते हैं? जब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लेग्स of the table, so that also becomes a correct sentence. Okay, legs of the table. So let's see what's there here. So living things that lions mean. So lion जो है वो एक living है. Obviously यहाँ पे हम apostrophe s दे सकते हैं. Personified objects like nature's law.
गेट स्टोर। कभी भी अगर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मिल, पिछले दिन ही मैंने जेंडर में ये चीज करवाया था, अगर आप लोगों ने जेंडर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में है, आप प्लीज जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन, पर्सोनिफाइड। जहां पे भी अगर personification means, what is the meaning of personification? Let's remind you once again. See, if I say nature, so generally nature जो है वो नॉन लिविंग है, राइट? लेकिन अगर मैं उसको एज अन लिविंग ऑब्जेक्ट मैं इसको कंसिडर करती हूँ, इसमें लाइफ भरती हूँ, तो ये हम लोग का एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। सो वहां पे हम इस टाइप के चीजों को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सो इस तरफ मैं बोल सकती हूँ नेचर्स ट्रेल। ओके, so whenever we personify an inanimate object, there we can use apostrophe s। वहां पे हम लोग apostrophe s यूज कर सकते हैं। टाइम, स्पेस, वेट, ये सब में भी हम लोग कर सकते हैं apostrophe s, जैसे कि वीक्स, स्टोन्स। ओके, वेट के लिए जो हम स्टोन्स थ्रो, लोकेशन जैसे कि गोइंग टू बेकर्स, अगर कोई नाम है, अगर बेकर्स बेकरी शॉप है, वहां पे अगर हम यूज करें तो हम लोग कर सकते हैं apostrophe s का यूज ऑफ prepositions when, sorry, whenever we use it with inanimate object we will use prepositions। Okay, so the, I said, the leg of the table, the legs of the table, the roof of the house, the roof of the house, nuance or action, the defeat of the enemy, so better than the enemy's defeat। Okay, so here comes the fourth one। Fourth one क्या है देखिए, Rama was to our caption means Rama, our caption made 50 runs। So if I say Rama the cricketer made 50 runs, so we are giving a secondary name to Rama। Okay, so opposition literally means placing near the noun। The noun captain follows Rama simply। So Rama अगर बोल सकते हो, Rama आवर कैप्टन, रामा कौन है, हमारा कैप्टन है, मेड 50 रन्स। सो यहाँ पे दोनों ही एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे आर वन एंड द सेम पर्सन, ओके, ऑक्यूपाइंग द सेम ग्रामेटिकल कीज। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो तो हम लोग वहां पे, मतलब वहां को उसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। ओके, सो द नॉमिनेटिव केस में कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर was a weaver। Okay, accusative means here the receiver। Yesterday I met your uncle the doctor। so यहाँ पे as हम लोग इसको clarifier भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे the fourth देखो, ग्रेट रिफॉर्मर एंड कबीर दोनों सेम ही है। ओके, अंकल एंड डॉक्टर दोनों सेम ही है। Possessive in it, have you seen Ganguly, the artist drawing? So here also we are using secondary noun to describe the subject। Okay, so let's come to almost the end of the video here। Rama, our captain, gave Hari the enemy's ball। So यहाँ पे Rama is acting like a nominative case, our captain, this is the clarifier, right, inheriting the nominative case। Then the verb gave, Hari becomes the accusative or indirect object। एनिमीज यहाँ पे पॉसेसिव, और यहाँ पे पॉसेसिव शो कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी
Here are few questions जो मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लाई हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि इसको आप ध्यान से देखो. ओके, सो द टीचर, यहाँ पे ये द टीचर हो गया नॉमिनेटिव केस, राइट. ये वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वीक्स पोसेसिव केस एंड एक्सटेंशन. यहाँ पे ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Same way, number 2, we visited William and Mary's new house. So यहाँ पे we हो गया nominative case, visited हो गया verb, William हो गया indirect object, okay, indirect object, and Mary's भी ये पे भी हो गया ये आपका indirect object plus possessive noun, possessive case, new house हो गया आपका direct object. Okay, so same with 3, the prime minister speech, यहाँ पे हो गया दोनों केस, nominative case as well and possessive case, showing the origin. Okay, inspired हो गया verb, the citizens ये हो गया indirect object of the nation, direct object. Okay, so and I hope ये 3 आपको clear है. So number 4 and number 5 जो है ये आपका होमवर्क रहेगा एंड मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें. Okay, so we are almost at the end of our video. I hope guys that you will understood the whole chapter and अगर कोई भी queries हो तो please आप कमेंट जरूर करिएगा एंड अगर कोई दूसरा टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आए तो जरूर वो टॉपिक भी मेंशन करिएगा. Thank you so much. I hope you liked the video and if you did, please like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. Thank you so much guys. Thank you so much. Bye bye. Take care all of you.